Hello, good morning students. How are you all? I hope all are good. How the things are going on? Well, very good. So have you tried all the questions of this chapter, issue of debentures? How many questions you have solved from this chapter till now? Write your comment in the comment section. Write how many questions you have solved till now. So students, whatever question you have done, it's good. If you are not doing, do and start doing. Okay. So this is the last question from issue of debentures, and from tomorrow, day after tomorrow onwards, we are going to start new chapter, non-profit organization, chapter number 1. Okay. So listen carefully. Whatever I am discussing the things in this question. This is question number 31. Last question of this chapter. Okay. Have your book, please. Open your notebook. Take your pen and pencil, whatever you are having, and open question number 31 in your book. So let's move. Well, see, on 1st April 2018, King Electronic Limited issued 10,000 8% debentures of rupees 100 each at a discount of 6% redeemable after 5 years. All debentures were fully subscribed. It has a balance of 1 lakh in the capital reserve. It decided to write off discount in the first year itself from capital reserve. What is the meaning of this question? This question is saying King Electronic issued 10,000 8% debentures on cost rupees 100 each. Okay. After that, these debentures were issued at discount of 6% and are redeemable after 5 years. Okay. So we have to pass journal entry. So prepare format of journal entries. Prepare format. Format will be date, particular, ledger folio, debit amount and credit amount, and the top you have to write Journal of King Electronic Limited. Okay. See here beta, on April 18 debentures were issued and the rate of 100 each. Okay. अब यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि what is the amount that is to be called on allotment, what is to be called on first call, what is to be called on application. Nothing is mentioned. So entire money will be collected at the time of application. So we will write bank account debit to डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. सी हियर 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 6% डिस्काउंट है. कितने रुपए आ गया? 6 रुपये डिस्काउंट आ गया. हाउ मच? 6. वर्किंग नोट में नोट कर लीजिए ये. यू कैन नोट डाउन दिस थिंग इन द वर्किंग नोट ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट थिंग, the rate of each debenture was 100 and discount on issue was 6. तो टोटल कितना बचा? 94. now 94 multiply by how many debentures were there? 10,000. so 10,000 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 9,40,000. Okay, how much will be 9,40,000?
40,000. So this much money will be collected at the time of application, right? So here I have passed the entry, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक ही बार में सारा पैसा ले लिया गया है, दैट इज़ बाई 9,40,000 अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से आया है. इज़ देयर एनी डाउट क्लियर? अब क्या होगा, दिस मनी वी हैव टू एडजस्ट. सो हम लोग पास करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. ओके, सो 94 रेट था, 10,000 डिवेंचर्स थे, तो हो जाएगा 9,40,000. ओके, 6 रुपये का डिस्काउंट है, तो 10,000 इंटू 6 इट विल बी 60,000 बेटा, राइट. नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल राइट टू 8%. कितने परसेंट डिबेंचर इशू हुए थे? 8%. बेटा 8% डिबेंचर में टोटल 9,40,000 प्लस 60 करोगे 10 लाख आ जाएगा ना. अगर आप वैसे भी देखिए तो 10,000 डिबेंचर्स मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितना आएगा? 10 लाख ही तो आएगा, ठीक है. सो दिस वे application money will be adjusted. Okay, now this in this question we are having 1 lakh in the capital reserve and discount on issue is rupee 60,000. so question is saying write off discount from the capital reserve. so here we will write capital reserve account debit, capital reserve account debit टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर. 60,000 इधर आ जाएगा, 60,000 इधर आ जाएगा. ओके, वी विल बी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट बनाएंगे बाई कैपिटल रिजर्व. फर्स्ट ऑफ ऑल टू 8% डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट कितना आएगा 1 अप्रैल को 60,000. वी विल राइट टू डिबेंचर अकाउंट 8% डिबेंचर अकाउंट 60,000. now the 60,000 will be transferred to capital reserve, then we will write on 31st March by capital reserve 60,000 here we will write beta. Okay, so this way we will prepare this debentures account. Okay, so is it clear till here? With any problem, if anybody is having problem then write, and write all of you write your SR number who have watched this video till now. Now write your SR number ki sir I have watched video completely. Okay, same is question number 32. read this question number 32. On 1st July 18, Z Limited issued 40,000 9% debentures of rupees 100 each at 4%. Subscribed has fully balance. It has a balance of 2 lakh in capital reserve, 140 security premium. राइट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इन फर्स्ट ईयर इटसेल्फ. ठीक है, तो हम लोग कहाँ से राइट ऑफ कर देंगे? इस कैपिटल रिजर्व से. अगर नहीं भी पूरा होगा, सॉरी 2 लाख कैपिटल रिजर्व से, स्टिल बैलेंस विल बी देयर, दैट वी विल एडजस्ट फ्रॉम SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिसीव एप्लीकेशन मनी, तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. हेयर अगेन इंटायर मनी इज कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन. तो 4 रुपये का डिस्काउंट है, 96 पे आएगा. 96 से
1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,40,000 आ जाएगा. ओके, सो यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ. फर्स्ट एंट्री आई हैव एक्सपीरियंस. थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.